Assalamu alaikum dear students, I am Ms. Javeri and I am back with some more work. So today we are going to do the word meanings, sentences and question answers of this unit. Without wasting any further time, let's move on towards your English notebooks. Unit 3, the trap. This all work must be done on your English copy, and if you don't have it, try to get it and complete your missing work. Okay, starting with words meanings. Honest means good, to be good with someone, to be honest with your work and your tasks. Immediately means at once, फौरन से. Matter means problem, कोई भी मसला. Word sentences. I have my sentences, but those sentences which are written on your copy is okay, and if you have made any sentence by your own, and that's very good. Rubbish. Don't throw the rubbish on the roads, कि हमें सड़कों पे कूड़ा जो है वो नहीं फेंकना चाहिए. Servant. I have 2 servants. Servants are those people who work for us and they do our work. So I made the sentence that I have 2 servants, कि मेरे पास 2 servants हैं. Trap. This trap is made of metal, कि ये trap जो है वो metal का बना हुआ है. Moving on, we have the question answers. That is, question number 1 is, why was the road unhappy? Road जो थी वो नाखुश क्यों थी? People throw rubbish on it, therefore the road was unhappy. लोग रोड के ऊपर रबिश फेंक रहे थे, कूड़ा फेंक रहे थे, दैट्स वाई रोड वॉज अनहैप्पी, बिकॉज रोड मूव नहीं कर सकती, और दैट्स वाई वो अनहैप्पी थी कि उसकी कोई फ्री विल नहीं है, और बॉय जो है वो खुद से कहीं भी आ जा सकता है, फिर भी उसकी हेल्प मांग रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ डिड द पीपल हर्ट द ट्री? कि लोगों ने ट्री को किस तरह हर्ट कर रखा था? पीपल हर्ट इट बाय टेकिंग इट्स फ्रूट एंड कट इट ब्रांचेस. लोगों ने ऐसे ट्री को हर्ट करके रखा था कि लोग उसके फ्रूट्स ले जाते थे उतार के, और उसकी ब्रांचेस भी कट कर सकते थे. माइट बी ट्री नहीं चाहता होगा या चाहता था कि लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करें, दैट्स वाई जो ट्री था वो हर्ट हुआ था इस चीज़ से. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हु लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप? किसने टाइगर को बाहर ट्रैप से आने में हेल्प की थी? द बॉय लेट द टाइगर आउट ऑफ द ट्रैप. जो बॉय था उसने टाइगर की हेल्प की थी ट्रैप से बाहर आने में. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हु पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप? किसने टाइगर को ट्रैप में वापस जो था वो जाने को कहा था? किस तरह उसने वापस उसको बॉय को बचाया था? द जैक पुट द टाइगर बैक इन द ट्रैप. जो जैकल था उसने टाइगर को वापस ट्रैप में एंटर करवाया था और बॉय की हेल्प की थी. डू यू थिंक द बुलक वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग? क्या आपको लगता है कि जो मिल्क काऊ थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी? नो, नहीं, इट वॉज नॉट, वो नहीं थी, बिकॉज क्योंकि इट हैड टू वर्क ऑल डे एंड लेस टू ईट. क्योंकि उसने बॉय को बताया था कि वो पूरा दिन काम करता है और उसको डे के एंड पे बहुत थोड़ा खाने को मिलता है, दैट्स वाई वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. बिकॉज जब आप खाते हो और तो आपको एनर्जी मिलती है, और इफ़ यू ईट लेस यू विल बी वीक, और आपकी एनर्जेटिक भी नहीं होगे, आपकी एनर्जी भी कम होगी. सो यू हैव टू ईट मॉडरेटली, कि आप इतना खाओ कि आप बहुत ज़्यादा इतना भी ना हो जाओ कि आपसे जो है वो चला फिरा भी ना जाए, इतना भी ना हो कि आपसे इतने वीक हो जाओ कि उस सेंस में भी ना चला फिरा जाए. तो यू हैव टू ईट द मील, द डाइट, द बैलेंस डाइट, ताकि आप परफेक्टली एनर्जेटिक हो और अपना हर वर्क जो है वो speedily कर सको. So this was our unit number 3, and we are done with the notebook work as well, that consists of word meaning, sentences and question answers. I am telling you again and again that if you are having the missing work, you can ask your friend or you can ask your relevant in charge to provide you the work. So you have to learn it, and you have to write it as well, and try to give the test of it as well, so that you can prepare yourself for the upcoming exams. So this was our amazing lesson, that was the trap. Try to read that unit again, try to memorize the difficult words, try to memorize the spellings of it, and do the chapter briefly. So now Allah Hafiz, take care of yourself.